Hello guys, once you get into an MBA college, this is a typical hostel room you are going to get. अगले 2 साल you are going to spend in this kind of a room. And trust me, once you're in the B school, college से ज़्यादा आपको ये चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी. The time you spent in the hostel, friends, ये वो lounge area, then what you done in the classroom. ठीक है, वो आपने देखा भी होगा जो दो स्टेट में हॉस्टल, खाना तो हर हॉस्टल का वैसे ही होता है. सो आई जस्ट गिव अ वॉकिंग टूर ऑफ दिस प्लेस कि यहाँ 2 साल तुम्हें जो करना है करो. नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू और गो टू चेक कि तुम अंदर क्या कर रहे हो. फाइन. सो द फ्रीडम, दैट्स अ फ्रीडम व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. बट फ्रीडम कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. 3 दिन 4 दिन एंजॉय करने के बाद ना कि पेरेंट्स से दूर अपन चिल लाइफ अपना एंजॉय करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं. 4th डे यू रियलाइज कि बॉस कोई टोकने वाला ही नहीं है. And we as a Indian students, Indian kids are so much pampered by the parent that you will start missing that thing. So then you have to take over the role of that guy कि तुम्हें खुद को ही करना है. And I think that's the biggest learning of staying in hostels. कि तुम्हें you will become more responsible. Yeah, so freedom comes with responsibility. जो मूवी में डालता है कि powers come with responsibility, freedom also comes with responsibility. Okay, so let's walk you through. I'll walk you through this campus, this room. ये कैसा है. So now let me take you to the hostel room. This is the corridor we have to go through, and this is very green plantation, this and that, typical red brick building. Yep, and we're moving toward the room. That's our main final corridor. This is a lounge area where you can study, sit, talk to your friend, this and that. Now it's late in the night. I've just arrived to the hostel room finally. सो आई लव टू स्टे इन द हॉस्टल रूम. यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है यार यहाँ पे जाके. सो दिस इज़ द वाइट एरिया. अंदर चलो वाइट है, बाहर से रेड ब्रिक्स, अंदर इज़ क्वाइट गुड. सो माई रूम इज़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉरिडोर. सो आई लव टू स्टे इन द रूम्स. यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये. सो 119 वॉज माई रूम नंबर. सो लेट्स ओपन एंड चेक इट आउट. तो 2 साल यार तुम्हारी लाइफ के इज़ गोइंग टू द बेस्ट ऑफ योर लाइफ. दिस इज़ गोइंग टू बी योर वर्क एरिया, स्टडी एरिया, प्ले एरिया. आपको जो करना है. देयर सिंगल रूम अकोमोडेशन फॉर एवरीवन. सो दैट दे नॉर्मली दे गिव यू 2-3 ऑप्शन. सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए, ट्रिपल रूम चाहिए, एंड द कॉस्ट गोज अप अकॉर्डिंग टू दैट. ऑल द बेस्ट.